था, endless and infinite loop are same, but if anybody is asking about infinite loop, please and please don't give this type of example. Don't give this type of example, please. Right? Don't give this type of example, because you all know, कि ये कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा. ठीक. The only infinite loop of for is this. This is the only one infinite loop of for. Only one. बहुत से लोग चालाकी कर देते हैं, सर I is equal to 1 and sir I have written 2 is less than 3. सर ये कंडीशन तो देखिए हमेशा जो है वो ट्रू रहेगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा. तो भाई नहीं, आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वगैरह किया है. सो इनफाइनाइट कहता है कि कुछ भी ना हो. दैट इज इनफाइनाइट लूप ऑफ फॉर. एंड व्हाट अबाउट द व्हाइल? while में infinite loop of while is only this. that means while true. यानी for के अगर अब इस सॉरी ये 3 हो गया, 2 होना चाहिए. for में if I have something like this so it is infinite. while में if I have something like this so this is infinite. तो यहाँ आपके आ जाएंगे statements which you want to run for infinite number of times, and over here also statements which you want to run for infinite number of times. Right? Yes, we can be asked what is infinite number of what kind of error it is. कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, तो कुछ भी पूछ सकता है. ठीक है ना, तो वो चीज़ है. So anything else if you want to ask it something, or we can move on with our course. I have given access to your mic. You can speak from your mic also. Nothing to ask. चलिए. So I am muting you all and returning back. Yes, now what do you want, किसले? बोलिए क्या बोलना है. Sir, if we want to describe a string tokenizer variable in variable description, how we will do? बस सिंपल से लिख दीजिए. एक जैसे आपने स्ट्रिंग के लिए लिखा है स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग टोकनाइजर के लिए स्ट्रिंग टोकनाइजर लिखिए. टू सेपरेट स्ट्रिंग्स विद स्पेसेस, खत्म. या टू ब्रेक सेंटेंस इनटू वर्ड्स, उसका डिस्क्रिप्शन ये हो जाएगा. और डेटा टाइप तो उसका स्ट्रिंग टोकनाइजर है ही है, वो तो कोई उसमें चेंज ही नहीं कर सकते हम लोग. if I am writing if I am writing a variable n for name and the data type is string, so you have 3 columns in variable description. The data type is string, variable is n, और description हो जाता है for inputting name. तो ऐसे टोकनाइजर का कोई वेरिएबल होगा, डेटा टाइप टोकनाइजर हो जाएगा और वो वेरिएबल हो जाएगा. और उसके बाद आप लिख दीजिए टू एक्सट्रैक्ट वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस. Okay, thank या you, sir. हाँ, टू ब्रेक सेंटेंस इनटू वर्ड्स, टू ब्रेक स्ट्रिंग्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ऐसे कुछ. मतलब सिंपल डिस्क्रिप्शन की वो क्या कर रहा है, वो चीज़ है. यस कुशागर नयन, व्हाट यू वांट टू आस्क? So what is the use of keyword final? Final is used to make constants. फाइनल int a इज इक्वल टू 10 अगर आपने लिख दिया तो अब a की वैल्यू अगर आप 12 करोगे तो भी नहीं होगी. एंड अगर आप a प्लस प्लस लिखोगे तो भी ये नहीं चलेगा. माने ये बिल्कुल ही आपके जो पॉइंट्स हो गए, ये दोनों पॉइंट्स अब चलने से नहीं रहे, कभी नहीं चलेंगे. फाइनल मीन्स क्रिएटिंग कॉन्स्टेंट्स इन जावा. Okay, sir. Anything else? Nothing. चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. चलो, let us move on with our course and let us switch back to the Taklu and Haklu that we were having. So we were seeing something like this. So see, on the last turn we were having a class in which we were having intr and string n.
Then we created two objects. One was Taklu, another was Haklu. What was Taklu? An object. What was Haklu? An object of what type? Student. Then what I was doing, I was inputting the data for Taklu, and I was inputting data of Haklu, and I was printing the data for Haklu as well as Taklu. So जरा सा revision point of view से, if I run this code, so see it is asking the data for Taklu. For Taklu, I am giving 12 as a roll number, and Taklu ji as name, and 45 as roll number for Haklu, and Haklu ji as name. So you can print, you can see Haklu data में Haklu का roll number और नाम print हुआ है, Taklu data में Taklu का roll number और नाम print हुआ है. Now we were seeing classes and objects. We know that there is one thing that we have, is we have one thing which is the data, right? And we have other thing which is functions. And what are those functions should be? What those functions should be? Operations that are performed on this data. वैसे this होता है, मतलब डेटा होता है, मैंने this इसलिए लिख दिया कि इसी डेटा के ऊपर. And when we are having this type of thing, when we are having this type of thing, that basically is, and it is enabled by the keyword class. यानी एक क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं. क्या होता है? One is the data, one is the data, and other is the operation that is performed on that data. That means this data. दो चीजें हमारे पास क्लास में होती हैं, तब जाके एनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट हमारा एनेबल होता है विद द हेल्प ऑफ क्लास. बट व्हाट आर वी हैविंग इन आवर केस? वी आर जस्ट हैविंग ओनली द डेटा, right? We are just having only the data, which is the int r and string n. हमारे पास तो सिर्फ डेटा है. Let us now define functions. हम लोग को पता है, अभी तक जो हम लोगों ने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस के बारे में पढ़ा, variables which are outside all the functions are known as global variables. तो यानी अभी हमारे पास यहाँ पे global variables हैं. If I talk in terms of class, मेरे पास सिर्फ अभी यहाँ डेटा है, मेरे पास कोई फंक्शन नहीं है जो इन डेटा के साथ काम कर सके. तो let us try to make functions. I am making a function input. What will this input do? This input is going to take the roll number and name, क्योंकि ऐसे फंक्शन होने चाहिए जो इन्हीं डेटा पे काम करें. तो इन डेटा का क्या काम है? इन डेटा का काम है to store one roll number and to store one name. And what is input function doing? It is asking me one roll number and name. अब वो store कहाँ करेगा? इसी R और N में. So let us try to see what I am talking about. I am talking about something like this. Right? Up. Whenever we are inputting, we need data input stream या scanner या input stream type of reader, whatever it is. तो जब हमको इनपुट की जरूरत होती है तभी हमें डेटा इनपुट स्ट्रीम चाहिए. तो अब हमारे प्रोग्राम में इनपुट कहाँ हो रहा है? इस void इनपुट में. इसका मतलब डेटा इनपुट स्ट्रीम इसके अंदर होना चाहिए, कहीं और नहीं. कहीं और होगा तो गलत बात है. Whenever we want to sit, then only we need chair with us. ये नहीं चेयर कहीं और पड़ी है और आप ऐसे एक्टिंग करो बैठने की. पॉसिबल है हम चेयर में बैठे हैं? पॉसिबल ही नहीं है. और जब भी हमें बैठना है तभी भी नीड चेयर. ये तो है नहीं कि चेयर लिए घूमते हैं हम, है ना. So same is over here. Whenever we need input, then only we need data input stream. So whenever we are making a function to input, we need data input stream. So inside this input, there is data input stream. What I am doing is I am inputting the value of r and n. Again, whenever we use read line with data input stream, so you know that we have to use throws exception. तो इनपुट यहाँ हो रहा है, थ्रोज एक्सेप्शन भी यहीं आ जाएगा. ठीक. उसके बाद आई एम क्रिएटिंग वन मोर फंक्शन विच इज द आउटपुट फंक्शन.
What is this output going to do? It will also deal with that data. And what it is going to do, it is going to print the NNR. It is also going to print the NNR. अब मेरे पास एक स्टूडेंट डेटा टाइप है, किसके जैसा? क्लास जैसा. उसके अंदर क्या है? वन इंट, वन इंट एंड वन स्ट्रिंग. और व्हाट इज दैट इंटीजर टेलिंग? इट इज रोल नंबर. व्हाट इज द स्ट्रिंग? इट स्ट्रिंग टेलिंग इट इज नेम. माय क्लास नोज हाउ टू इनपुट. क्या इनपुट? वन रोल नंबर एंड वन नेम. आफ्टर देन माय क्लास नोज हाउ टू प्रिंट रोल नंबर एंड हाउ टू प्रिंट नेम. ठीक. Now I created one Taklu and one Haklu. What? Two objects of this class. What does Taklu know? And what does Taklu have? Taklu has one intr and one string n, यानी एक रोल नंबर और नाम उसके पास होगा. As well as Taklu knows how to input and how to output, क्योंकि ये उसी क्लास जैसा है. Same is with Haklu. Haklu will also have one intr, int, a string n, and Haklu also knows how to input and how to output. तो ज़रा देखें कि क्या होता है जब हम इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करते हैं. कैसे अब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे? राइट नाउ आई हैव जस्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्टूडेंट, टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज Taklu and Haklu. Now a message is on the screen, enter Taklu data. So I am saying Taklu input. So what will Taklu do? It is going to take the values of R and N. अभी तक क्या हो रहा था? हम सबको समझा रहे थे Taklu ऐसे इनपुट लिया जाता है, Taklu ऐसे प्रिंट किया जाता है. अब मैंने क्या किया? ह्यूमन बींग्स की डेफिनेशन चेंज कर दी. हमने कहा आज अब जो भी ह्यूमन बींग होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, जो भी स्टूडेंट होगा उसको खुद इनपुट आउटपुट करने आता होगा. इससे पहले इफ यू सी, आई वाज राइटिंग Haklu.r में इनपुट एंड Haklu.n में इनपुट. हु वाज डूइंग दिस? मी. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू हु इज मी और हु इज यू. इट इज मेन. तो वी वर इनपुटिंग. नाउ आई हैव टोल्ड स्टूडेंट. मैंने स्टूडेंट को ही बता दिया, माने जब भी कोई स्टूडेंट आएगा उसको पता होगा ऑलरेडी कैसे इनपुट और कैसे आउटपुट करते हैं. तो नाउ आई हैव क्रिएटेड वन स्टूडेंट, सो आई डोंट हैव टू बॉदर कि कैसे इनपुट होगा. आई जस्ट हैव टू आस्क द स्टूडेंट Taklu इनपुट. सो व्हाट विल Taklu डू? अपना इनपुट फंक्शन चलाएगा. इनपुट में क्या हो रहा है? R और N इनपुट हो रहा है. किसका R और N इनपुट हो रहा है? Taklu का. Right? Same is over here when I am saying कि enter Haklu data. So I will say Haklu input. And the same when I want to print Haklu ka data, I will not print Haklu ka data. What I will do? I will say Haklu output your data. बताओ भैया का रोल नंबर और नेम है तुम्हारा. The same is with Taklu. I will not print Taklu's data. What I will do? I will ask Taklu output. So what will Taklu do? Taklu is also going to display his roll number and name. Right? Let us try to execute this code and see whether it is working or not. So just let us try to compile this code. Oh, हाँ, एक चीज और आपको अभी सिर्फ बतानी है. Now, you know what is the significance of throws exception? Throws exception कहता है this function will not handle the exception. क्योंकि ये तो थ्रो करता है. तो who will handle the exception? इसका कॉलर. And which is the function which is calling this input? It is main. देखिए main में input कॉल किया है, यानी main में input यूज किया है. इसका मतलब इसका कॉलर कौन है? main. तो who should handle the exception? main. लेकिन क्योंकि ये डेटा इनपुट स्ट्रीम के लिए लिखा हुआ है थ्रोज एक्सेप्शन, तो ये जो क्यों मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो स्कूल में डिफाइन करेंगे जब आप पढ़ने आओगे. अभी आप ये समझ लो, जिस फंक्शन के आगे आपने थ्रोज एक्सेप्शन लिखा है वो फंक्शन जहां भी कॉल हो रहा है आपको उसके आगे भी थ्रोज एक्सेप्शन लिखना है. अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो यू नो वेरी वेल यू नीड ट्राई कैच. यू नीड ट्राई कैच, यानी आपको इस इनपुट को ट्राई कैच के अंदर डालना पड़ेगा. ठीक,
तो अगर आपको समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो व्हेन वी विल मतलब स्टडी इन स्कूल देन आई विल एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, और अभी आपको ये समझना है कि यहाँ भी थ्रोज एक्सेप्शन लिख दीजिए। ठीक, so see I am compiling my code, there is no error and now I am running my code and let us try to see कि क्या होता है जब ये कोड चलता है। तो see it is asking me Taklu data, तो I am saying roll number 45 and the name is Taklu ji, and then it is asking Haklu data, I am saying roll number 78 and the name is Haklu ji. So you can see Haklu data is roll number 78 Haklu ji, Taklu data is roll number 45 Taklu ji आ गया अपने आप, हमें कुछ नहीं किया, हम स्मार्ट कर दिया, तुम ही सब प्रिंट कर देना, हम कुछ नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ तुमसे बोलेंगे तब प्रिंट करना। अर्लियर वी वर प्रिंटिंग ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ haklu.r and taklu.r, right? So now if you have understood this, now see another thing. Till now these were considered as global variables, but now as we are having a separate class, these will be known as data members. So intr is a data member, string n is a data member. ये डेटा मेंबर होते हैं ऐसी चीज जहां हम अपना डेटा एक्चुअल में स्टोर करेंगे जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं। दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज डेटा मेंबर्स। these functions which we have are known as member functions or methods। methods मतलब defined functions, right? So in a class there are two things, one is data member and another is member functions. What are data members? Where we store our values या data, and what are member functions are the operations that are performed on those data, which data which the class is storing, no external, कोई बाहर की चीज नहीं है। देखिए यहाँ आर एन में ही इनपुट और आर एन ही इस क्लास के पास थे, कुछ और मैंने इनपुट नहीं किया है, न ही कुछ और मैंने डिस्प्ले किया है, जो भी खेल होगा वो सब कुछ इसके साथ होगा। ठीक, आप रीड लाइन चलाते हो तो किसके लिए चलाते हो, डी डॉट रीड लाइन जैसे मैंने चलाया है, तो वो डेटा इनपुट स्ट्रीम के लिए चलाया है, तो वो किसके लिए है, रीड लाइन के लिए, किसी और के लिए नहीं है। अगर मैं स्कैनर के लिए यहाँ पे रीड लाइन लगा दूँ तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि रीड लाइन डेटा इनपुट स्ट्रीम के लिए बना है। ठीक, तो वो उसी क्लास के लिए उसी की तरह ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक, दिस इज हाउ बेसिकली वी हैव। सिमिलरली इफ यू अनदर वांट टू अंडरस्टैंड, कंसिडर कि मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जिसका नाम मान लो है बंटी। सो नाउ इफ आई एम आस्किंग बंटी input and I am entering one SOP for Bunty is, sorry, enter Bunty data. So what do you think, will it input? No, it will not input. Why? Because it will give compilation error, क्योंकि I said there will be a Bunty, but मैंने बंटी को तो बनाया ही नहीं। मैंने क्यों नहीं? क्योंकि बंटी कैसा है, स्टूडेंट जैसा। स्टूडेंट कौन है, क्लास जैसा। क्लास कौन है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वी कैन नॉट यूज until and unless we give new. So what we have to do is Bunty is equal to new student, and now the Bunty is into existence. Here Bunty was not in existence, सिर्फ बताया गया था Bunty कोई होगा, Bunty की वैल्यू क्या है, वो ये है। And now if I compile this code, there is no error, and now see it is asking for Taklu, so I am giving this. For Bunty I am giving this, right? For Bunty I am giving this, and for Haklu I am giving this. So मैंने बंटी का डेटा प्रिंट ही नहीं किया था, इसलिए इसने सिर्फ हकलू और टकलू का डेटा प्रिंट किया है। ठीक, मैंने बंटी का आउटपुट चलाया ही नहीं था, मैंने सिर्फ बंटी का इनपुट ही चलाया था। क्लियर?
So these are basically the member functions, and these are known as data member, right? Anything you want to ask, you can ask. I am enabling your mic. पूछ लीजिए जो पूछना हो, otherwise class time is up. Anything you want to ask? This is basically what we are seeing, classes and objects का topic. तो हमने अभी class बनाई, एक अपना अपना data type बनाया. That means जब भी हमें कोई ज़रूरत होती है, if I want to create my data type, I can create like this. I can define my data and I can define my operations that can perform on that data. And how can I use my class in any of the program is something like this, right? Use your mic. Who is giving me the chat message? I don't know. Use your mic please. मैंने enable किए हैं mic, आपको क्यों नहीं use करते हैं? Obviously we can make Bunty in one go भाई, ये पूछने की बात ही नहीं है. आप देख रहे हो टकलू जब one go में बना है तो हकलू one go में बना है तो बंटी भी बना सकते हैं. देवना भगत we haven't discussed about static till now, वो next turn पे शायद आएगा. And it's a big topic, we will discuss. अब वो turn आने ही वाला है बस. Right, so this is basically what we have. Chaliye, the time is running up. You also have to get ready for the school. I too have to reach and arrange all the things for your viva. So we shall meet on the next turn. Thank you and goodbye.